Ladies and gentlemen, just about 21 days to go for the mega Ram Mandir inauguration. Ayodhya is all decked up. While politics still continues over this entire issue, what's important to perhaps highlight is what is essentially taking this entire politics and, more importantly, who exactly is really responsible for it? Why exactly should there be, in the first place, politics over something that India is celebrating together? Take a look at some of these reports that have been filed by my colleague Priyanka Sharma that will give you the mood on the crowd. Listen. Now, along with the entire inauguration of the Ram Janmabhoomi, we also see a lot of beautification work that is also being done. And not just that, a lot of rehabilitation of the heritage structures that have always existed in the city of Ayodhya is also being done. Right now, I am at a very historically significant place, which is the chalk of the 4 historically significant gates that essentially exist here in the middle of the city of Ayodhya. And this was basically the gates of the entire city as well. And this was also the gate for Shujā-ud-Dawla, the Nawab of Awadh, that used to be here during the year of 1753. And now we are looking at these gates that used to be closed when he used to in fact go from here towards his other mahal as well that used to exist there. So this essentially is being safeguarded. The historical significance and the heritage value of these historically significant monuments is also being safeguarded, and not just safeguarded, also rehabilitated. And if we show you the 4 historically significant gate, the Char Darwaze that is being called here in Ayodhya, the kind of restoration and the rehabilitation that is going on here, the workers are hard at work. In fact, we are also being told as to how the rehabilitation is being done with the limestone that essentially is used in the rehabilitation work, but also a special kind of chuna as well that is also used. To get more understanding of this, we have people who are working here to help us understand how exactly they are doing the work of rehabilitation of these gates. आप बताइए यहाँ पर कितने लोग क्या-क्या काम कर रहे हो आप लोग यहाँ? यहीं पे चूना गुड़ मिलता है, सन मिलता है, गुड़ मिलता है, बजड़ी मिलता है जो खेत में बोआती है, और जीरा है, मरीच है, संफ है। उस सबको मिला के ये चूना वगैरह ये सब मिला के बनता है। और कितना चूना, मतलब किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हो इसको यहाँ पे काम करने? चूना इसमें 10 कट्टा मिलता है, ईटा पीस के बनती है। जो ईंट होते हैं उसको पीस के ईंट पीस के बनती है। So essentially, this is the kind of powder, in fact, which is used for the rehabilitation. This is a powder which is used after mixing of bricks and also limestone as well, that is used in this to essentially also rehabilitate and also safeguard these heritage and historically significant monuments that we see of the 4 doors. Along with this, there are several other projects along the lines of heritage value that is being given a lot of significance by the UP government. In fact, the entire project for the rehabilitation of these 4 doors had been over 70 crore rupees that had already been released, and we will see that the completion of this project perhaps will also happen in a few months from now. With video journalist Vipin Mori, I am Priyanka Sharma for Republic. When it comes to Ayodhya and the kind of developmental push that the entire city is also getting, we also see that a lot of heritage structures that are being rehabilitated, restructured as well. And one such structure is where we are standing along the lines of the Panchkosi Parikrama Marg here at the Saket Sadan, that essentially also be known as the Afim Kothi. And in fact, this Saket Sadan, if you tell our viewers about what exactly is going to be put up here, there will be a museum as well that will be put up to understand the entire history. However, this was the Dilkusha Mahal that used to be of the 3rd Nawab of Awadh's, Shujā-ud-Dawla's, in fact, mahal that had been made by him. In fact, we have some details of the entire project as well. Over here as well, we have seen at least 16 crore or so worth of project that has been commissioned, and we are looking at heritage experts as well who are coming in to rehabilitate this entire mahal. In fact, this was Shujā-ud-Dawla who had made this entire mahal. In fact, had also been
made keeping in mind that whoever would look at it would feel happy, and that is why this name had been come up, which was Dilkusha Mahal, that it was called. In fact, it has a huge courtyard as well of this entire mahal that we see, which is right now under construction, because the Saket Sadan is going to be put up here. And now as we talk about the actual Dilkusha Mahal, or the Afim Kothi as it was called, interestingly this name had also been given because after the Britishers had handed over this, in fact, an area was given to the Narcotics Control Bureau, because of which this entire place had been referred to as Afim Kothi. And now, of course, the real name is that of the Dilkusha Mahal. We also see the stone that has been embedded with that name. It is referred to as the Dilkusha Mahal. It was in fact made, it was a point of envy that had been erected by the third Nawab of Awadh, Shah ud Daula, who had reigned during the time of 1753 is the year. And he had erected several such monuments that essentially had been a point of envy for the people. We'll take our viewers through inside of this Dilkusha Mahal, Afim Kothi, or now the Saket Sadan. And we will also try to understand how this entire construction is being carried out, as we are looking at only quicklime and brick dust that is being used for the rehabilitation of this entire mahal as well. In fact, we also have a gentleman here with us who is also going to be speaking to us to understand how exactly this work is being carried out. यहाँ हमें बताइए किस तरह से काम चल रहा है. इसको पहले अफीम कोठी कहते थे और इसको दिलकुशा महल एक्चुअली था, पर उसको फिर अफीम कोठी कहा गया. अब साकेत सदन होने वाला है. किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है, क्या क्या काम यहाँ चल रहा है? मैडम, यहाँ पे तोड़ फोड़ का, डेंटिंग पेंटिंग का काम चल रहा है अभी हाल फिलहाल तो. और वैसे इधर जो अपने सीमेंट वगैरह सारे मटेरियल है वो उसमें लगाया जा रहा है. और इसको जो इसकी डेंटिंग पेंटिंग तोड़ के मरम्मत की जा रही है. जो सारा मटेरियल नया माल मिलाया जा रहा है हाल फिलहाल. और इसमें जो वो बढ़िया, इससे भी बढ़िया इस्तेमाल किया जा रहा है चूने का. वो बजरी और सीमेंटेड मिला के मशीनों से पिसाई करके बढ़िया तरीके से की जा रही है हाल फिलहाल. So essentially we also see the glass doors and the frame of the doors as well that we see of this entire Saket Sadan. And we are also being told how essentially this is going to be made into a museum which will reflect the entire history of the city of Ayodhya. At one point, the point of envy for the rest of the people in Ayodhya, the Dilkusha Mahal used to stand tall, had been given to the Narcotics Control Bureau, and post which it was referred to as the Afim Kothi. And now, by March 2024, this is going to be the Saket Sadan that is going to be completely transformed. And in fact, there are experts who have been brought in from Jaipur, who are in fact also developing this entire Afim Kothi or the Saket Sadan as another point of envy for the people of Ayodhya. With video journalist Bipin Mori, I'm Priyanka Sharma, reporting from Ayodhya for Republic. We are bringing you a very special coverage right from the river itself, where in fact the Gupkar Ghat, where we are looking at several of the tourists who come and take their boats and actually go across the entire riverfront area that is also being developed here over around 10 kilometers that we are looking at the riverfront that is being developed as a part of the Master Plan 2031 that the UP government in fact is developing along the lines of Gupkar Ghat. And we are already looking at the big tourism push that this entire area is also getting, because just looking at the sheer number of people who have come here to take the boats, to in fact take a round at this riverfront, and a very historically significant place as well when it comes to the temples that have been put up here, the kunds that are being developed, several around kunds, over 180 or so kunds that are also being developed by the UPPCL that are around developing Ayodhya, developing the city of Ayodhya. Let's try to get in a word with several of the tourists, several of the locals in fact, who have come with us at this on this boat journey to understand how are they really looking at Ayodhya, at the changing Ayodhya today as well. आप बताइए, आप अयोध्या के ही हैं, यहाँ पे किस तरह से जो बदलाव हो रहा है, जो रिवर फ्रंट जो डेवलप की जा रही है,
क्या क्या यहाँ पर इसकी खूबी है, और पीछे मैं देख रही हूँ कई सारे मंदिर वगैरह भी हैं, तो उसके बारे में भी अगर हमारे दर्शकों को कुछ बता पाएं। सबसे पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, और ये मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा जो विकास की धारा बनाई गई है वो काफ़ी शानदार है। और यहाँ पर जो ये रिवर फ्रंट डेवलप किया जा रहा है, इसका प्रमुख उद्देश्य ये था कि जो इसके किनारे के जो हमारे पर्यटक स्थल है वहाँ पर जो पहुँचने वाला पानी था, इसकी वजह से पर्यटक की जो क्षमता थी वो कम हो रही थी, उस क्षमता को विकसित किया गया है। साथ साथ एक ये जो शानदार और ये जो अविस्मरणीय दृश्य यहाँ उपस्थित होता है, उससे यहाँ पर पर्यटन की क्षमता में काफ़ी वृद्धि हुई है। मैं ये भी देख रही हूँ कि कई सारे जो मंदिर हैं यहाँ पर, काफ़ी सारे जो पुराने मंदिर हैं उनका भी रिहैबिलिटेशन का काम किया जा रहा है, रिस्ट्रक्चरिंग का काम किया जा रहा है, क्योंकि खाली एक राम जन्मभूमि मंदिर नहीं है, कई सारे यहाँ पर मंदिर हैं और उसकी काफ़ी जो हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है वो भी कई सारी है। तो अगर आप थोड़ा सा अगर पॉइंट करके भी बता पाए कि कहाँ कहाँ पे कौन सा क्या मंदिर है और किस तरह से उसका रिवैम्प किया जा रहा है, और जो सुभाष चंद्र बोस जी का भी जो आपने बताया पॉइंट, क्या वो यहाँ से अभी हमें दिख रहा है? सबसे पहले मैं यहाँ पर बताना चाहूँगा, ये जो सामने आपको भगवान श्री राम का मंदिर दिख रहा है, ये यहाँ के अयोध्या के जो नरेश थे उनके द्वारा ये विकसित किया गया था। और ये जो स्थान है ये अपने आप में हमारे स्कंद पुराण से लेके जो हमारे रामायण है या फिर रामचरितमानस, सब में इस स्थान का एक विशेष स्थान महत्व है, क्योंकि भगवान श्री राम ने जब अपने राज्य का पूरा धर्म पूर्वक उसका पालन किया और फिर जब उनको बैकुंठ धाम जाने का संदेशा आया, तो वहां से ही इसी स्थान से उन्होंने अपनी प्रजा के साथ, अपने हित मित्रों के साथ इसी स्थान से बैकुंठ धाम के लिए यहाँ से प्रयाण किया। इसीलिए इसको श्री गुप्त हरि या गुप्तार घाट के नाम से, यहीं से भगवान गुप्त मतलब यहीं से अदृश्य हुए थे। अदृश्य होने का तात्पर्य यह है कि भगवान ने यहीं से बैकुंठ धाम के लिए प्रयाण किया था। तो इसलिए इस स्थान का विशेष महत्व है, चाहे यहाँ पर आपकी पूर्णिमा हो या एकादशी हो या कार्तिक पूर्णिमा है या रामनवमी हो या सभी विभिन्न जो पर्व होते हैं, वहाँ पर इस स्थान पर स्नान करने से जो लोगों की एक तो आध्यात्मिक जो अनुभूति होती है, निश्चित रूप से उसका विकास होता है। और यहाँ सरयू जी का जो पवित्र जल है ये कैलाश मानसरोवर की विभिन्न धाराओं से होकर आती है। ये कहा गया है जब इस धरती की उत्पत्ति हुई थी आज से 14 अरब साल पहले, उस समय धरती की जब उत्पत्ति हुई तो धीरे धीरे जब यहाँ पर विभिन्न प्रकार के जो भौतिक स्थलों का निर्माण हुआ, उसमें जो पेंजिया था वहां पर जो कैलाश मानसरोवर जो है वो एक प्राचीन स्थल है, सबसे जो हमारा प्राचीन स्थल है। और वहीं की स्थल से वहीं पर जो हमारी जो विभिन्न धाराएं हैं उन्हीं का जन्म होता है, और उन्हीं धाराओं से जो हमारा पवित्र पानी है वो सरयू नदी के द्वारा जो है यहाँ पर आता है और लोगों को प्राप्त होता है। इस पर शायद आपने सुना होगा कि सदगुरु जी ने भी कैलाश मानसरोवर के विभिन्न प्रकार की जलधाराओं के बारे में, तो वो ये हमारी सरयू जी की जलधारा वहीं से आ रही है। तो यहाँ पर स्नान करना अपने आप में अमृत को धारण करना है, और विशेष पर्वों पर धारण करने पर निश्चित रूप से ये हमारे जीवन में आध्यात्मिक रूप से हमारी जो विकास की भावना है उसको निश्चित रूप से बढ़ाती है। और बिल्कुल जैसे कि वी आर शोइंग आवर व्यूअर्स एसेंशियली हाउ दिस the footfall as well is also increasing as we speak, and the number of boats as well is a very reflective sign as to how the number of people have been gathering here, the number of people who come from across the country. Let's also try to get in a word from the person who's driven us here to the middle of the entire river, and who's actually just like him there are a lot of other boats that are here, and that also gives us a huge push of tourism as well. भैया बताओ कितने लोग यहाँ पर आते हैं, कितने लोग दिन में यहाँ पर सवारी करने आते हैं और खाली डुबकी भी लगाने आते हैं, कितने लोग आपको दिख रहे हैं? और रिवर फ्रंट जब से हुई है क्या क्या इसमें डेवलपमेंट हुआ? मैम इसमें डेवलपमेंट ये हुआ कि यहाँ पे घाट ये सब जो बन चुका है पूरा नया, यहाँ से लेके अयोध्या तक आप यहाँ से चढ़ेंगे डायरेक्ट, यहाँ से आप अयोध्या तक जा सकते हैं, पैदल भी जा सकते हैं, कार से भी जा सकते हैं, बाइक से भी जा सकते हैं आप। कितने लोग आते हैं यहाँ? मैम यहाँ पे सुबह कम से कम मॉर्निंग में 1,500 से 2,000 लोग तो डुबकी लगाते ही हैं सुबह के टाइम में, हर रोज? यस मैम। और आपको बोट में लेने के लिए कितने लोग आते हैं यहाँ पर? मैम बोट तो बहुत सारी हो चुकी है प्रॉपर, अब तो आदमी लोग ज्यादा आने लगे हैं जब से राम मंदिर बन चुका है। यस मैम। अब आगे भी मंदिर अब बनने वाला है 22 जनवरी को, क्या इस समय आपकी भावनाएं भी हैं, क्योंकि आप यहाँ के ही हैं, यहाँ पर काम भी कर रहे हैं, और उसके ऊपर भी आपने कई सारा जो डेवलपमेंट है उसके इर्द गिर्द भी देखा है। जब राम जन्मभूमि टेम्पल बना है, खाली मंदिर की बात नहीं है पर कई सारी चीजें अब चेंज। मैम चेंज तो बहुत सारी हो गई, अब तो यहाँ पे रोड भी बहुत अच्छा बन चुका है, पहले यहाँ पे रोड भी नहीं था उतना, पूरा जंगल ही जंगल पूरा था, अब तो इस तरफ गार्डन नया बन चुका है, इसके पीछे नया गार्डन बन चुका है, इसके इस तरफ भी पूरा। मैम अभी चारों तरफ ही काम चल रहा है। अभी मैम जहाँ से राम भगवान जी गुप्त हुए अभी वो मंदिर भी बन चुका है, वो देखिए।
Let me also bring in my colleague Priyanka, who's been camping there in Ayodhya over the last couple of days. Ayodhya, Priyanka, you've been there for the last couple of days. Give us a sense of the kind of excitement that is palpable, and one can actually feel it from the reports that you've been sending us. Do they even talk about the kind of politics that is surrounding, or for the people of Ayodhya, what matters is the grand inauguration of Ram Temple? Well, absolutely, Shavan. In fact, we are at another such point where we are standing is essentially also a place, a tent city that is being developed for the number of people who are in fact going to be here by the VHP. These kind of preparations are being done in the city of Ayodhya. So that also helps us understand the number of devotees that the government machinery is also expecting will be coming here in Ayodhya as well. Let's keep panning our cameras to show our viewers essentially where we are standing. This is a part of the tent city, and of course we have seen how the kind of enthusiasm and the kind of preparations are also being carried out by the people here, by each and every person, in fact, however they can contribute. We have another official of the VHP as well, who is in fact joining us, and we will try to get in a word from him to how exactly the preparations are going on. गजेंद्र जी, ये बताइए किस तरह से यहाँ पर जो preparations की जा रही है, किस तरह से जो उत्साह है लोगों में, उसको भी ध्यान में रखते हुए किस तरह से जो सारी तैयारियां की जा रही हैं 22 जनवरी की और उसके बाद के लिए? लोगों में उत्साह तो है, ये तो पूरे देश में वैसे ही दिखाई दे रहा है इस समय, क्योंकि 14 वर्ष के बाद राम आए थे तो एक अलग प्रकार का, अब तो 500 वर्ष के बाद राम अपने घर में प्रवेश करेंगे, तो एक उत्साह का माहौल तो पूरे देश में ही है, उत्साह का वातावरण भी पूरे देश में ही है। अयोध्या एक छोटा स्थान, तो उसको ध्यान में रखकर यहाँ जो लोग आएंगे तो उनके रहने की व्यवस्था तो यहाँ पर हम लोग कर रहे हैं। प्रारंभ में यहाँ संत आएंगे, तो 22 जनवरी को संतों के रहने की जो व्यवस्था है वो हमने प्रारंभ में यहाँ की है, और ऐसे हमने 1200 के लगभग ऐसे कमरे बनाए हैं, जिसको कमरे कहेंगे, लेट बाथ अटैच कमरे हैं। उसके बाद 308 के लगभग हमारी डोरमेट्रियाँ हैं। कुल मिलाकर हमने सोचा है कि यहाँ 1200 और 1400 के बीच में 1500 तक भी हम उसको कर सकते हैं, ऐसे लोग रह सकें। तो कई सारे लोग आने वाले हैं, उसकी भी सारी तैयारियां की जा रही हैं। उसी के बीच में आपसे एक और राजनीतिक सवाल भी पूछना चाहूंगी, क्योंकि कई सारी जो हमने राजनीति है उसके ऊपर खेली जा रही है। हमने देखा है जो इंडी अलायंस है उसके जो नेता है कई सारी बातें बोल रहे हैं राम जन्मभूमि मंदिर को लेके, उस पर भी आप क्या बोलेंगे, किस तरह से देखते हैं? जो जैसे कि सीताराम येचुरी ने CPIM के उन्होंने मना कर दिया आने से, कहते हैं कि जो धर्म है उसको राजनीति के साथ में जोड़ा जा रहा है, राजनीति को इसमें लेकर आया जा रहा है और इसके ऊपर अब राजनीति की जा रही है। आप किस तरह से देखते हैं जो ऑपोजिशन के लीडर्स हैं जो वो बयानबाजी कर रहे हैं राम जन्मभूमि मंदिर को लेके, उसको कैसे देखते? राम तो सबके हैं, और बिना राम के तो ये देश की पहचान ही राम से है, तो इसमें राजनीति ना की जाए तो ज्यादा अच्छा है। So, Shravan, that essentially is the reaction that we get from each and every person from Ayodhya when they are asked about the entire politics of it, because they are saying that they are completely insulated from it and they are more concerned about the kind of preparations that they can make for the 22nd of January. As we just heard the VHP leader also tell us how there will be several of the saints that will be coming in from Kashi as well. In fact, there is already a lot of people who have started coming in, the saints and seers who want to go to the Ram Janmabhoomi temple, have a visit at the Ram Janmabhoomi temple even before the Pran Pratishtha in fact starts as well. And we are looking at how the preparations are underway, and of course the kind of rituals that will also be carried out on the 22nd of January, keeping in mind that the kind of VVIP movement is going to take place here, and the area that we are trying to look at and the number of people that for whom the arrangements are made helps us understand the magnanimity of the entire event and how many devotees can also be expected. In fact, Shravan, when we were speaking to some of the people who the government machinery, they were also telling us as to how the biggest challenge for them is also going to be about the 22nd of January, but also post the 22nd of January,
when the devotees in fact will start coming in to Ayodhya, and at least 50,000 is the footfall that the government machinery in fact was also expecting, and that is what has been kept in mind while the arrangements were also being made. In fact, viewers, I was also able to have a conversation with the head priest Satyendra Das, in fact Maharaj, who was able to tell us about the preparations that are also being carried out in Ayodhya for the Ram Janmabhoomi temple inauguration and the politics around it. Let's take a look. क्या क्या रिचुअल्स किए जाएंगे, किस तरह से जो प्रतिमा है रामलला की उनको स्थापित किया जाएगा मंदिर के अंदर, क्या कुछ हमें एक्सपेक्ट? देखिए, उसमें प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा की जितनी विधि हैं वो सब करना पड़ेगा। उस मूर्ति को अन्न में धरा जाएगा और उसके बाद में पुष्पों में धरा जाएगा, औषध में धरा जाएगा और जल में धरा जाएगा, दूध में धरा जाएगा। इस तरह की पूरी व्यवस्था होने के बाद तब प्राण प्रतिष्ठा की प्रक्रिया शुरू होगी, जिसमें ग्रह दशाओं की शांति के लिए भी कहा जाएगा कि ओम ब्रह्मा मुरारी स्त्रीप्रांतकारी भानु शशि भूम सुदो बुधश्च गुरु से शुक्र शनिराव केतव सर्वे ग्रह शांत करा भवंतु, सभी ग्रह शांत रहें, क्योंकि प्रभु राम का कार्य होना है। इसमें सब लोग सहयोगी करें, सभी देवताओं का आवाहन किया जाएगा, उनकी पूजा की जाएगी, उनका सहयोग लिया जाएगा और इसी प्रकार निर्विघ्न पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा संपन्न हो जाएगी। और जितने लोग आएंगे सबकी सुरक्षा की, भोजन की, रहने की पूरी व्यवस्था है और सब कुछ पूर्णतया संपन्न किया जाएगा। उनकी जब आंख की पट्टी खोली जाती है तब क्या क्या होगा? और मंदिर के बारे में भी अगर हम बात करें तो मंदिर पहले 2 मंजिला होने वाला था, अब 3 मंजिला मंदिर बना है। काफी सारा उसमें आर्किटेक्चर हमें देखने को मिल रहा है, बहुत स्पेशल चीजें हैं, बहुत कुछ सुंदर बना है। उसकी कारीगरी इतनी सुंदर बनी है कि खाली देखते देखते ही मन प्रसन्न हो जाता है। और उसमें जब रामलला में प्रवेश करके और उनकी स्थापना हो जाएगी तो एक दिव्य स्वर्ग लगता है, जिसे हम कल्पना करते हैं स्वर्ग, जिसके लिए हम पूजा अनुष्ठान तपस्या करते हैं स्वर्ग जाने के। उस प्रकार का दृश्य वो गर्भगृह में जहाँ रामलला विराजमान होंगे वो दिखाई देगा, जो अलौकिक दृश्य होगा, जिसे देख करके लोग मन प्रसन्न होंगे और ये वर्णन नहीं कर सकते कि कितनी सुंदरता है। और जब 22 जनवरी है और 18 जनवरी 16 जनवरी से हम क्या क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या क्या रिचुअल? देवताओं की पूजा होती है, अनुष्ठान होता है और ग्रह दशाओं की शांति होती है। ये सारे कार्यक्रम 15 से शुरू हो जाएंगे, क्योंकि 14 को खरवा समाप्त होगा और 15 से कार्य समाप्त होंगे। उसके बाद में ये संपन्न किया जाएगा, क्योंकि वो बहुत बड़ा अनुष्ठान होता है और उससे कार्यक्रम होते हैं और जिसमें देवी देवताओं का आवाहन और उनका विसर्जन, ये सारे कार्य संपन्न होंगे। ये 15 से शुरू होकर के और 22 को जाकर के प्राण प्रतिष्ठा होगी। सत्येंद्र दास जी, इतने सालों का जो पूरा स्ट्रगल रहा है राम मंदिर को लेके, रामलला को लेके, उसको आप किस तरह से देखते हैं? फाइनली ये जो मंदिर है अब इनॉग्रेट होने में बहुत कठिनाई हुई और रामलला को हुई, पुजारियों को हुई, क्योंकि पहले विवादित ढांचा में रहे रामलला, फिर 6 दिसंबर 92 को गिर गया और त्रिपाल में आया। 28 वर्ष तक रामलला त्रिपाल में रहे। उन्हें तमाम झंझा बातों को सहना पड़ता रहा, चाहे गर्मी हो, चाहे बरसात हो, ठंडी हो, सभी प्रकार का प्रकोप वहाँ लगता था, क्योंकि कपड़े का बना हुआ मंडप था जिसमें रामलला विराजमान थे। उसके बाद में वर्तमान समय में लकड़ी का बना हुआ अस्थायी मंदिर है, जहाँ रामलला विराजमान है, उनकी पूजा अर्चना हो रही है। और इसी प्रकार से उठ करके अब उस भव्य मंदिर में जाएंगे, जो आज एक प्रकार से तमाम शोध से और तमाम कारीगरों के जो कलाकृतियाँ हैं, जो उनका उसमें योगदान है और जिस प्रकार सुंदर बंधा हुआ है, वो हमें जाकर के विराजमान होंगे तो अलौकिक दृश्य दिखाई देगा रामलला के।